small o, omega or big omega, little omega, and theta notations. We already discussed, means we can write the function f in terms of gn, means fn is equal to order of gn. Fn and gn are two asymptotic positive function. Order of gn are, we can say that fn belonging to order of gn if and only if there exists a positive constant c and n0. There exists positive constant c is greater than 0, n is greater than 0, n naught, such that 0 is less or equal to fn is less or equal to c of gn. There exists some positive constant c and n naught such that this condition satisfies, means this gives a asymptotic tight upper bound, means this gives a asymptotic tight upper bound because 0 is less or equal to fn is less or equal to c of gn is less or equal to c of gn. When we can say that uh, the several representation of complexity, like when we represented 2 of n square plus 3n plus 2n 2, fn is equal to this, or fn is equal to uh, 2 n to the power 2.9, or fn is equal to fn is equal to 4n cube plus 3n square plus 7. In this way, and here we can say that this is equal to order of n square because we ignore some constant terms. This is order of n cube. This is order of n cube. Here we find the value in what value of c and n naught this condition this holds this property, means we can say that fn is equal to order of n square. Similarly, for what value we can say that n to the power 2.9 to be from the definition of big O notations, we find the value of positive constant c and n naught. Here, this is also for, this holds for all n is greater than n naught. This holds for all n is greater than n naught. We already discussed this. Like here, just take one examples and show that this is 10n cube plus 20n are not equal to order of n square, so that 10n cube plus 20n are not equal to n square. Here from the definition of from Sir, yes. sir, someone is waiting. Can you please join her? Okay. Okay, to show that 10n cube plus 20n are not equal to order of n squared, we know that from the definition of big O notation, we can say that 0 is less or equal to fn is less or equal to c of gn. G of here, this is gn,
this is Fn. 0 is less or equal to, put all those values here. 0 is less or equal to Fn is what? 10n cube plus 20n, that is less or equal to C of Gn. C is what? C and Gn. So we find the value of C. Gn is what? Gn is n square. Divide each side by n square. So this is, we can say that this is 0 is less or equal to 10. 0 is less or equal to 10n cube by, means this is 10n plus 20 divided by n, that is less or equal to C of, that is less or equal to C. This means we can say that zero is less or equal to 10n plus 20, that is less or equal to C of n. So this means we can say that this is a contradiction, because C depends on n, means value of C, we cannot determine the value of C without taking the value of n. This means we can say that this shows that 10n cube plus 20n are not equal to order of n square. Here the value of C depends on the value of n. N is the input size. सर ये आपने दिस इज के बाद क्या लिखा है? This is contradiction, because C depends on n. This means we can say that 10n cube plus 20n are not equal to order of n square. In this way, we can prove that for some function Fn, what will be the value of Gn? We can say that this function is written in terms of order of Gn in case of big O notation. Similarly, generally we use a big O notation for representing a complexity of worst case, and another drawback means we cannot represent the complexity in best case or average case generally, and big O notation also ignore the constant term. Here we generally ignore this constant term and we write only the efficiency in terms of Gn. So these are the some drawbacks. Next we discuss about what is the meaning of little O notation or small O notation. So next one is the little or small O notation. Only minor difference between, because this notation gives asymptotic upper bound this gives asymptotic upper bound, not a asymptotic tight upper bound. Hence from the definition we can say that Fn belonging to Fn is equal to small o of Gn. Here this is a small o, not a big O. Or we can say that Fn belonging to small o of G of n, if and only if there for any constant C and there exists positive constant C and there exists a positive constant C, there exists a positive constant C and n0. सर Yes. हेलो सर, आपने ऊपर वो
इस पे जो ऊपर शो किया है कंटरेशन, तो उस पे n स्क्वायर से डिवाइड किया है ना? यस यस, n स्क्वायर से डिवाइड किया है। c की वैल्यू जो है n पे डिपेंड कर रही है। 10n + 20 इज लेस आर इक्वल टू c ऑफ तो n। वहाँ पर सिर्फ 10n + 20 अपॉन n होगा ना? कहाँ पे? सॉरी 10n, यहाँ पे क्या है? 10n + 20 अपॉन n। हाँ, ये 10n है आपका, ठीक है, इसको कर लीजिए कंप्लीट। ये जो है 10n + 20 अपॉन n, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके। Yes. हाँ, तो दिस इज इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट c एंड n 0 such that for any c is greater than 0 and n naught is greater than 0, c is greater than 0 and n naught is greater than 0, this condition satisfied, means 0 is less or equal to fn is less than c of gn. This is the condition. Here only the difference, यहाँ पे हेलो आप देख सर, रहे हैं। Yes, एसिम्प्टोटिक के बाद क्या लिखे हैं? asymptotic upper bound. This gives asymptotic upper bound. This means fn is equal to, we can say that fn is equal to small o of gn or belonging to small o of gn if and only if there exists a positive constant c and n naught such that for any, ये टर्म देखिए, ये जो यूज हुआ है, दिस टर्म इज नॉट यूज्ड व्हेन वी डिफाइन अ बिग ओ नोटेशन। वहां पे क्या था? देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट c एंड n नॉट सच दैट फॉर सम c is greater than 0 and n naught is greater than 0, the condition 0 is less or equal to fn। यहाँ पे क्या था टर्म? less or equal, ठीक है, less or equal c of gn, but in the definition of little o notation, this condition is 0 is less or equal to fn is less or equal to c of gn। the another difference क्या है? एक तो ये है, दूसरा डिफरेंस क्या है? this is for any, वहां पे क्या था? for some। तो instead of using for some c is greater than 0, we use for any c is greater than, किसी भी c के लिए जो कि greater than 0 हो। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। if not satisfied for any c is greater than 0, this means we cannot say that the complexity means fn is equal to small of o of gn, okay। so let us discuss the example here, or another definition, we can say that the fn is equal to order of gn or fn belonging to fn is order of gn or fn belonging to स्मॉल ओ है, यहाँ पे स्मॉल ओ ऑफ small o of gn if and only if limit of n tending to infinity, limit n tending to infinity fn divided by gn is equal to 0, ठीक है। यदि ये कंडीशन होल्ड कर रही है, देन वी कैन से दैट fn is written as small o of g of n, fn is equal to small o of g of n। let us consider example, means when fn is written as, let us example where fn is written as this, fn is equal to suppose fn is equal to 5 of n is,
यस यस थोड़ा स्लाइड सर ऊपर कीजिए, स्लाइड थोड़ा सा ऊपर कीजिए। बोलो बोलो बस और वही सर, और छूट गया था लिखने के लिए। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। so here fn, suppose the value of fn, suppose we take fn is equal to 5 of n cube, 5 of n cube, 5 of n cube, so that this is equal to order of n cube। और देखिए इसको, ये सॉरी यहाँ पे इसको स्मॉल ओ ट्रीट करिएगा आप, नॉट बिग ओ, स्मॉल ओ। बिग ओ नोटेशन में हम इसको ऑर्डर ऑफ एन लिख सकते हैं, क्योंकि बिग ओ की डेफिनेशन क्या है कि फॉर एनी कांस्टेंट सी एंड एन नॉट देयर एग्जिस्ट सम सी इज ग्रेटर देन 0 and n naught is greater than 0, such that 0 is less or equal to fn is less or equal to c of gn। तो देखिए यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे c की वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। c की वैल्यू क्या है, c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5। तो इससे जो भी बड़ी वैल्यूज होंगी c इज इक्वल टू 5 के बाद, उसके लिए क्या हम लिख सकते हैं, दिस इज equal to order of n cube in terms of big O notation, but we cannot write it in terms of small o notation, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 of n cube को यदि हम कहें कि this is less or equal to some constant c of n cube, ठीक है, तो it may be possible कि some constant c के लिए ये होगा less or equal to होगा, बट यहाँ तो आपको लेस देन है, दिस इज ऑलवेज लेस देन फॉर एनी कांस्टेंट सी। कोई भी कांस्टेंट सी ले तो किसी भी कांस्टेंट के लिए तो ये होल्ड नहीं करेगा कि ये कंडीशन ट्रू करे। सपोज हम सी की वैल्यू ले रहे हैं 1, तो 1 के लिए तो ये होल्ड कर नहीं रही कंडीशन कि 5 ऑफ n क्यूब इज लेस देन इक्वल टू n क्यूब। ये हम लिख नहीं सकते कि 5 ऑफ n क्यूब इज लेस देन n क्यूब, ठीक है। दिस इज ए कंट्राडिक्शन फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, means this is not true for any value of c, means any value of c that is greater than 0. This means this is a contradiction, and we can prove that this proves that this contradiction shows that 5n cube are not equal to, यहाँ पे क्या होगा, are not equal to small o of n cube. Clear? Similarly, when we can write n square means fn is equal to fn is equal to 2 of n square. We can say that this is equal to order of n cube, this is equal to order of n cube. So answer is yes, because here this satisfies for any positive constant c, for any positive constant c that is less or equal to 0, that is greater than 0, that is greater than 0. This satisfies for any constant, any positive constant c that is greater than 0. So this condition satisfies. This means we can say that or we can also say that limit of n tending to infinity fn divided by gn, fn की वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn इज व्हाट 2 ऑफ n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब divided by n cube. This is equal to limit of n tending to infinity 2 divided by n. This means as n tending to infinity n tending to infinity 2 by n tends to 0. So this means this is equal to 0. Hence we can say that this means we can write 2 of n square is equal to small o of n cube. Small o of, ये क्या है, small o, not a big o, small o of n. Similarly, let us consider another examples. So when this means fn is equal to n square divided by 1000 or 100 or 1000 whatever, so we can also say that this is equal to order of n cube.
from limit n tending to infinity fn divided by gn, because limit of n tending to infinity fn divided by gn, that is equal to 0. Next case, so that let us consider another example. So that n cube divided by 1000 divided by 1000, that is equal to not equal to ऑर्डर ऑफ n क्यूब. यहाँ पे देखिए क्या है, स्मॉल ओ है, स्मॉल ओ नोटेशन. तो दिस मीन्स शो करना है आपको इवन द वैल्यू ऑफ सी की. देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू वेरी लेस है, 1 डिवाइडेड बाई 1000, बट even means even this is not, we cannot say that n cube divided by 1000 are equal to order of n cube. How we prove? From the definition of big O small o notation, from the definition of small o notation, we can say that 0 is less or equal to fn is less than c of gn for any value of c that is greater than 0. So here we can say that 0 is less or equal to fn is what, n cube divided by 1000 is less than c of gn, means c of n cube. This means 0 is less or equal to 0 is less or equal to 1 divided n cube, and n cube are cancelled. So this is 1 divided by 1000 is less or equal to c of, is less than c, is less than c. This is means ये कह रहा है कि c is less than, c is greater than क्या होना चाहिए, c is greater than 1 divided by 1000. बट ये कंडीशन तब होल्ड करेगी जबकि किसी भी c की वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन, ये हम कहते हैं कि c दैट इज c इज लेस देन, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 2000 इज लेस देन c. तो इसके लिए ये होल्ड कर नहीं रहा है. दिस मीन्स वी कैन दिस फॉर एनी वैल्यू ऑफ c दैट इज लेस देन, दिस इज नॉट होल्ड्स फॉर, ठीक है. We can say that because when we select the value of c that is less than 1 divided by 1000, like when we select c is equal to 1 divided by 2000, this is not holds, this is not holds. This means we can say that this is a contradiction. This implies this is a contradiction with selecting any c that is less than 1000. ठीक है, क्योंकि ये c एनी c इज ग्रेटर देन 0 के लिए होल्ड करना चाहिए. तो व्हेन वी सेलेक्ट सम वैल्यूज ऑफ c दैट इज लेस देन 1 divided by 1000, this property not holds. This means we can say that this is a contradiction, and this shows that this contradiction shows that n cube, this implies n cube divided by 1000 are not equal to ऑर्डर ऑफ स्मॉल ओ ऑफ n क्यूब. यदि इसी को हम बोलें कि स्मॉल o ऑफ n टू द पावर 4, तो दिस इज ट्रू, वी कैन से दैट, बट दिस इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n क्यूब. यदि लिमिट भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, लिमिट 0 आएगी नहीं. इस केस में यदि लिमिट निकालें, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn डिवाइडेड बाई gn क्या आएगी, कांस्टेंट आ जाएगी. दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn इज व्हाट, n cube by 1000 divided by n cube. This n cube, this is equal to
1 डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ पे लिमिट क्या आ गई, लिमिट 0 आना चाहिए, इंस्टेड की लिमिट यहाँ पे कांस्टेंट आ रही है। दिस इज अ कंट्राडिक्शन, हेंस दिस मींस n क्यूब डिवाइडेड बाई 1000 आर नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n क्यूब। नेक्स्ट है Sir, ओमेगा, यस, some people are waiting to join the class. ओके, जस्ट आई सी। Okay, we can here we can say that this is order of miss small o of n to the power 4, because we can say here limit of n tending to infinity fn divided by gn। gn क्या है यहाँ पे, n to the power 4 है, तो this is equal to 1 divided, ये क्या आ जाएगा, limit of n tending to infinity fn means 1 divided by n cube divided by 1000 डिवाइडेड बाई, ये क्या है, ये fn है, दिस इज gn, gn इज इक्वल टू व्हाट, n to the power 4। दिस मींस दिस implies limit of n tending to infinity 1 divided by 1000 n। so this is, as n tending to infinity, this tends to 0, so this is 0, hence we can say that we can write n cube by 1000 is equal to small o of n to the power 4। so next notation is omega notation, omega or big omega, the notation is this omega notation। to just be just be defined means this gives a omega notation gives a asymptotic tight lower bound। this gives asymptotic tight lower bound। बिग ओ नोटेशन क्या देता था, asymptotically tight upper bound। this notation gives asymptotic tight lower bound, and this is the notation that is used to representing best case complexity, best case, this is used to representing best case complexity। we from the we can define omega notation, we can say that fn is equal to omega of g of n, or fn belonging to omega of g of n if and only if there exists a positive constant c, if and only if there exists a positive constant and there exists positive constant c, and c is greater than 0, n naught is greater than 0, such that 0 is less or equal to c of gn is less or equal to fn। ये कंडीशन है। जस्ट इसके अपोजिट क्या था, बिगो नोटेशन में 0 इज लेस आर इक्वल टू fn इज लेस आर इक्वल टू c ऑफ gn। मीन्स यहाँ यदि इसका ग्राफ देखेंगे फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट, यदि इसका ग्राफ देखेंगे, व्हेन वी सी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, n increases time, run time। so here we can say that this is a this is, what is this, this is fn, this is c of gn, c of gn ये क्या है, n नॉट।
तो here we see that for all n is greater than n naught this condition, यहाँ पे तो देखिए कहीं फ्लक्चुएट कर रहा है ग्राफ, कहीं c की वैल्यू c ऑफ gn की वैल्यू अपर हो रही है, कहीं fn की वैल्यू अपर हो रही है, ठीक है। बट इसके बाद देखिए ये n पॉइंट है दैट इज नोन एज ए n नॉट, इसके बाद fn जो है एसिम्प्टोटिकली ग्रो कहीं टच नहीं कर रहा है c ऑफ gn को, ठीक है, कहीं पे भी इसके बाद टच। तो फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन दिस कंडीशन सेटिस्फाई 0 इज लेस आर इक्वल टू c ऑफ gn इज लेस आर इक्वल टू fn। Here for some positive constant c is greater than 0 and n not is greater than 0. So this is the definition of omega notation means this provides asymptotically, यहाँ पे देखिए less or equal to fn, this means this provides asymptotic tight lower bound, asymptotically tight lower bound, so that let us take some example, so that 5 of n square plus 10n is equal to omega of n square. So that 5 of n square, and find the value of c naught, find the value of c and n naught. Find the in what value of c and n naught we can say that fn belonging to order of gn, means fn is equal to omega of g of n. So here from the definition of omega notation, definition of omega notation क्या है? 0 is less or equal to c of gn is less or equal to fn. ठीक है, put all those values here, we can say that this is 0 is less or equal to c of gn, means c of n square is less or equal to 5 n square plus 10n. 5 n square plus 10n, when we divide each side by n square, we can say that 0 is less or equal to c is less or equal to 5 plus 10 divided by n. 5 plus 10 divided by n. So this means c is less than or equal to, less or equal to. So as here we can say that as n tends to infinity, 10 by n tends to 0. This means here put the value of 10 by n is equal to 0. So this is 0 is less or equal to c is less or equal to 5. 0 is lesser. This means what is the value of c? The value of c is either 5 or less than 5. ठीक है, 5 or less than, because c is less or equal to मैक्सिमम c की वैल्यू क्या हो सकती है? 5, एंड इससे लेस क्या है? इस 5 या 5 से लेस वैल्यू के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी. तो we can say that what is the value of c? The value of c is what? This means c is equal to, क्या कह देंगे हम? c is equal to, putting the value of 10 by n is equal to 0, we can say that c is equal to 5 or less. ठीक है, then we determine the value of, now we determine the value of n naught. Value of n naught. So here we can say that 0 is less or equal to c
is less or equal to 5 plus 10 divided by n naught. 0 is less or equal to c is less or equal to put the value of c in this equation. This equation 0 is less or equal to c is what? 5 is less or equal to 5 plus 10 divided by n naught. Subtract 5 from each side. Subtract 5 from each side. And say that this is minus 5 we can say that minus 5 is less or equal to 0 is less or equal to 5 plus 10 divided by n naught. This is 0 is less or equal to 10 divided by n naught. तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 10 डिवाइडेड बाई n naught. तो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n टेंड्स टू 0 1 by n tends to 0. When we take a minimum value of n naught is equal to 1, n naught is equal to 1. So this condition, when we take a n naught is equal to 1, so condition is satisfied, means 0 is less or equal to 10 divided by n. So this means when n naught is 0 is less than minus 5. So what will be the value of n naught? So when n naught is equal to 1, so this is equal to is equal to 1. So this means this is 0 minus 5 is less or equal to 0 is less or equal to 10 divided by 1. So this means 0 is less than 10. Condition is satisfied. Hence we can say that n naught is equal to, this implies n naught is equal to 1 and c is equal to, what is c is equal to 5. So this condition we can say that Fn means what? That is equal to Fn is हेलो सर. yes. सर फाइनल आंसर में हम c इक्वल्स 5 क्यों लिखेंगे? लेस इक्वल्स 5 नहीं लिखेंगे? नहीं, ये यहाँ पे क्या है, इन फॉर वैल्यू ऑफ c, यहाँ पे एक डेफिनेशन देखिए इसकी जो डेफिनेशन है क्या है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट c इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, c इज ग्रेटर देन 0 and n naught is greater than 0 such that 0 is less or equal to c of gn, that is less or equal to fn. तो c इस केस में क्या है, c की जो वैल्यू हम यहाँ जनरली लिख रहे हैं कि c इज इक्वल टू 5. इसका मीनिंग क्या है, जैसे वहां पे हम लिखते हैं c इज इक्वल टू 5 बिग ओ नोटेशन के, तो c इज इक्वल टू 5 उसका मीनिंग है कि 5 आर मोर देन 5. ठीक है, 5 आर मोर देन 5 के किसी भी वैल्यू के लिए वो ट्रू आंसर देगा. यहाँ पे जब हम हैं c इज इक्वल टू 5, तो दिस मीन्स 5 आर लेस देन 5. ठीक है, 5 या 5 से लेस कोई भी वैल्यू के लिए ये क्या देगा, 5 आर इससे लेस वैल्यूज के लिए क्या होगा, आंसर आपका ट्रू होगा. ओके, मीनिंग इसका ये है. जनरली हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, c इज इक्वल टू 5. मीनिंग इज दैट कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 5 और लेस. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा नोटेशन क्या है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 5 और लेस बोलेंगे. ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि c इज लेस और इक्वल टू 5, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, c इज लेस और इक्वल टू 5. ठीक है, ये डिफिनेशन से क्लियर है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ c विच इज लेस और इक्वल टू 5. जहां पे तो c जनरली यदि हमने यहाँ पे लिखा है कि c इज इक्वल टू 5, दिस मीन्स द वैल्यू ऑफ c इज 5 और लेस. यदि बिग ओ नोटेशन के केस में c इज इक्वल टू 5 लिखते हैं तो वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 5 और मोर वहां पे. In this way we can show that
दिस Fn इज इक्वल टू, जो भी था Fn की वैल्यू, Fn क्या था यहाँ पे, Fn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 10n, 5n square plus 10n is written as omega of n square, omega of n square for c is equal to, means c is greater less than or equal to 5 and n naught is greater or equal to 1. ठीक है, for n naught is greater or equal to 1. In this way we determine the value of the efficiency in terms of omega notation. It gives a tight lower bound. Similarly, the next notation is little omega notation. So only just as we explain the little o notation, similar we explain the little omega notation. Little omega notation, that is denoted by a symbol, this W, little omega notation. So here we can say that Fn is equal to omega of g of n, or Fn belonging to omega of g of n if and only if there exists a positive constant c and n naught, there exists a positive constant c and n naught such that for any c is greater than 0 and n naught is greater than 0, such that for any this is greater than 0, the condition f ये n naught is greater than n naught is less than, यहाँ पे क्या है, n naught is greater than 0, condition 0 is less or equal to c of gn is less than fn. Only the difference is यहाँ less or equal to हम लगाते थे big omega notation में, यहाँ only less than fn. ठीक है, this is the condition for any, यहाँ वहाँ पे क्या था, for some, generally big omega notation में क्या था, for some c is greater than 0. ठीक है, यहाँ पे क्या है, for any c is greater than 0, this condition satisfies 0 is less than c of gn is less or equal to fn. So that 50 of let us consider example, so that 50 of n cube divided by 1100 are not equal to omega, sorry ये little omega of n cube. ठीक है, शो करना है 50 of n cube, और ये कह सकते हैं कि n cube by 2 are not equal to omega of n cube. From the definition of little omega, 0 is less or equal to c of gn is less than fn. This means less than है यहाँ पे, less than fn, put all those value, 0 is less or equal to c of n cube is less than fn is what, 50 divided by 100 n cube. This means n cube and n cube are cancelled. When we divide all side by n cube, so 0 is less or equal to c is less or equal to 1 by 2. c is less than 1 by 2. तो ये किस वैल्यू के लिए ट्रू है, जनरली 1 by 2 is less than c होना चाहिए, उसके लिए ये ट्रू है, मतलब c is true for all values less than. तो when we take less than 1 by 2, c की वैल्यू c is less than 1 by
C is less than 1 by 2. This is a contradiction because any value of C it cannot be assured. This is contradiction because for any value of C, for any value of C, it cannot be assured to be for any value of C, it cannot be assured to less than 1 by 2. बिकॉज यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कि फॉर एनी सी इज ग्रेटर देन 0, एनी सी इज ग्रेटर, तो कोई भी सी इज ग्रेटर देन, तो किसी भी सी के लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि दैट इज लेस देन 1 by 2. Hence we cannot assure that the value of C that is less than 1 by 2 for any value of C. Hence this is a contradiction, and we can say that 50 of n cube divided by 100 are not equal to omega of n cube. ठीक है, ये आर सिंपली यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि another definition कि Fn is equal to omega of Gn or Fn belonging to omega of Gn if and only if limit of n tending to infinity Gn divided by Fn is equal to 0 होना चाहिए. ठीक है, Gn divided by Fn that is equal to 0. तो अब यहाँ पे देखिए Gn divided by Fn क्या आ रहा है, लिमिट ऑफ n tending to infinity Gn divided by Fn क्या होगा, that is equal to Gn क्या आया है यहाँ पे n क्यूब है, Fn क्या है, this is 50 divided by 100 of 50 divided by 100 into n cube. n cube and n cube are cancelled, so this is 100, this is equal to 2. कांस्टेंट वैल्यू आ रही है. ठीक है, दिस मीन्स वी कैन से दैट होना क्या चाहिए, 0 होना चाहिए. तो दिस मीन्स दिस इज नॉट, सिंस लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी Gn divided by Fn is equal to 2 which is a constant and that is not equal to 0. This means this gives a contradiction and we can say that 50 of n cube. Similarly, when we can say that this means 50 of n cube divided by 100 is written as omega of n square. Omega of n square, why? Because when we take limit of n tending to infinity Fn Gn divided by Fn, that is equal to Gn is limit of n tending to infinity. What is Gn? Gn is equal to n square divided by Fn is what? 50 of n cube divided by 100. So this is equal to limit of n tending to infinity 2 by n. So as n, this means this is equal to 0. So क्या कहते हैं कि we can say that 50 of n cube divided by 100 is equal to omega of n square. That's why we can say that here इसको यदि n भी हम करें तो this is also true. ओमेगा के टर्म्स में, लिटिल ओमेगा के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर, बट बिग ओमेगा के टर्म्स में इसको नहीं लिख सकते हैं. बिग ओमेगा के टर्म्स में, बिग ओमेगा के टर्म क्या है कि फॉर सम पॉजिटिव कांस्टेंट c दैट इज ग्रेटर देन 0. तो सम के लिए तो ये ट्रू हो जाएगा. वी कैन से दैट सम के लिए क्या लिख सकते हैं, 50 ऑफ n क्यूब डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू बिग O ऑफ n क्यूब हम लिख सकते हैं. बट वी कैन नॉट से दैट दिस इज ओमेगा बिकॉज हियर फॉर एनी c इज ग्रेटर देन 0. एनी c इज ग्रेटर देन 0 के लिए जरूरी नहीं है कि ट्रू हो. सम c इज ग्रेटर देन 0 के लिए ट्रू है, बट नॉट फॉर एनी c इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन डिफाइन. तो जनरली हियर यूज करते हैं फॉर एनी c इज ग्रेटर देन 0 और वहां फॉर सम c इज ग्रेटर देन 0. फर्स्ट डिफरेंस ये है. सेकेंड डिफरेंस, ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्या है आपका, सेकेंड डिफरेंस जनरली इन द फ्रॉम द डेफिनेशन
0 is less or equal to C of Gn is less than Fn। मीन्स क्या है यहाँ पे, ये देखिए लोअर बाउंड दे रहा है, C of Gn की वैल्यू इससे लेस है ऑलवेज इस केस में, मीन्स दिस इज अ लोअर बाउंड। वहां पे यहाँ पे क्या है, बिग ओमेगा के टर्म्स में क्या है, ये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, C of Gn इज लेस देन Fn। लिटिल ओमेगा के टर्म्स में, बिग ओमेगा के टर्म में क्या है, ये C of Gn इज लेस आर इक्वल टू Fn। दैट्स व्हाई दिस गिव्स अ एसिम्प्टोटिक टाइट लोअर बाउंड। ठीक है, नाउ दिस इज द टाइम ऑफ नेक्स्ट क्लास, so we stop here, and in the next class we discuss about theta notation and some properties, some basic properties of asymptotic notations, and then we start the recurrence relation. If any confusion, then please ask, otherwise show your सर Yes. सर लिटिल ओमेगा वाले टॉपिक के ऊपर आपने क्वेश्चन करवाया था सर, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बताओ। सर जो आपने उसमें एन नॉट की वैल्यू 1 ली है, तो सर अगर हम लोग एन नॉट की वैल्यू 2 लेंगे उसके लिए भी तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो क्या सर वहाँ पे एन नॉट की लीस्ट वैल्यू लेनी है? हाँ, एन नॉट की लीस्ट वैल्यू, ठीक है, एन नॉट की उससे ग्रेटर देन एन की कुछ भी वैल्यू लेंगे आप। फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है जनरली कि फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन नॉट के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये किसी भी नोटेशन में है, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन नॉट, ये वेदर द नोटेशन इज बिग ओ नोटेशन और स्मॉल ओ नोटेशन और बिग ओमेगा नोटेशन और ओनली द वैल्यू ऑफ सी इज डिफर, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन जीरो की वैल्यू हमें फाइंड करना है जिससे कि वो ट्रू हो फॉर ऑल एन। तो एन जीरो की जो मिनिमम लीस्ट वैल्यू लेना है उससे बड़ी वैल्यू के लिए तो ट्रू होगा ही होगा। ठीक है, ओके सर। now show your video for attendance।